Assalamualaikum my dearest kids, and welcome back to another exciting lessons, which is the overview of all the lessons we did. So in this lesson my dear students, we will start with unit number 1 क्योंकि हमने सबसे पहले unit number 1 पढ़ा था, which is the human body. और my dear students, हमने इसमें पढ़ा था that we have several body parts. जब हम अपने आप को mirror में देखते हैं तो हमें different parts नज़र आते हैं, right? And after that we discuss about there are several body parts which we use to move and do things, just like we use our hand to hold something, we use our legs to walk, we use our mouth to eat. After that we learn that we all are human beings. हम लोग कौन हैं? इंसान हैं. We are human beings. After that we learned about what are living things apart from human beings. There are how many types of living beings? 3 living things. First one is human beings, then animals, and then plants, right? How many living things are there? 3 types of, there are 3 categories of living things: human beings, plants, and animals. After that we also learn that all living things grow, means वो अपने एक ही size में नहीं रहते, they move to different sizes. Just like take an example of a human being, a person is born as a baby, उसके बाद वो बड़े होते हैं तो वो फिर अपनी teenage में आते हैं, then adult, and then an old person, right? In the same thing, a plant is first a seed, उसके बाद वो plant बनता है, then it becomes a tree. After that we also learned that we all need food to grow, right? That was all for this chapter. And after that we did the picture on page number 4. Then we did exercise which is on page number 6, and the exercise which we did was exercise number 1 and exercise number 2. Then we did the exercise number 3 and 4 which is on page number 7. ठीक है? इसके अंदर my dear students we take the correct answers, and in this we did some pictures through which हमें ये बताना था कि इसमें कौन से living things हैं और कौन से non living things हैं. Moving on towards the next unit. The next unit was all about senses. So how many senses do we have, my dear students? We have 5 senses. The first senses of sight, smelling, tasting, touching and sighting, right? हम चीज़ों को छूते हैं, we feel it, we touch it, we see it, हम उसको देखते हैं, we smell it, we taste it. So these all the things we learned in senses. First let's start with touching or feeling. We touch and feel through our skin or hand. After that we hear through our ear. Then we smell through our nose, we see through our eyes, and we taste through our tongue. These were the sense organs, and through these organs we do the 5 senses of our body. Then we did the concept check on page number 11, my dear students. वहाँ पे एक picture थी जिसके अंदर हमें उसके through बताना था. Then exercise on page number 12. Then exercise 1 of page number 13, and उसके बाद हमने की थी exercise 3, 4, 5 and 6 on page number 14, and after that we did exercise 8 on page number 15. And my dear students, इस चैप्टर में हमने सेंसेस के साथ साथ मूवमेंट्स भी पढ़े थे, और जो एक्सरसाइज पेज नंबर 12 पे है उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी मूवमेंट्स के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सेंसेस एंड द मूवमेंट्स एज वेल. Okay students, so the last unit we did was about healthy habits. In this unit, my dear students, we first started that our body is just like a car. Just like जैसे कि हम कार की मेंटेनेंस रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, we need our body to maintain itself
और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एनर्जी। जैसे कि एक कार को मूव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, अ पेट्रोल और एनीथिंग, इन द सेम मैनर आवर बॉडी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीन, और इसको भी एनर्जी की ज़रूरत है जो हम हमारे खाने के थ्रू देते हैं। इफ़ वी ईट हेल्दी फूड वी गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। वी इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो लर्न कि कौन कौन से हेल्दी फूड्स होते हैं और कौन कौन से अनहेल्दी फूड्स होते हैं। जस्ट लाइक ईटिंग टू मैनी कार्ब्स इज अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी साबित होता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. How can we keep ourselves healthy? By eating healthy food, and after eating the healthy food, exercising, my dear students. जब भी आप कुछ इनटेक करते हैं you have to utilize that energy, right? जब आप कुछ खाते हैं तो उसकी एनर्जी सर्कुलेट करने के लिए you have to move your body, ओके तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, हेल्दी रहने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ हमें प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है। आफ्टर हैविंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइजिंग, द थर्ड कम्स इज प्रॉपर स्लीप। व्हेन यू स्लीप फॉर 6 to 8 hours अ डे यू ऑलवेज बी एक्टिव इन द मॉर्निंग। हम जब 6 to 8 hours के लिए सोते हैं तो हमारी जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वी वेक अप फ्रेश एंड हेल्दी। आफ्टर दैट comes some things through which we keep our body clean. The first one is keeping your nails short. अगर आप अपने nail को properly साफ नहीं रख सकते तो it's good to keep it short. Then brushing your hair properly so that it won't tangle. Brush your teeth twice a day, means you have to brush your teeth twice a day, because when you brush your teeth before going to sleep and after having your breakfast, your mouth will feel fresh. Then bath daily, because you have to keep your body all over clean. So you have to bath daily, and after wash your hands before and after meals. As we have discussed, you all wash hands before meal, but you all have to wash the hands after meal, क्योंकि आपके हाथ पे जो मील के पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। यू हैव टू वॉश इट ऑफ सो दैट इट वोंट गेट स्टक एनीवेयर और वो जर्म्स को अट्रैक्ट ना करें। देन इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट इलनेस, कि अगर हम कभी जर्म्स के अटैक से बीमार पड़ भी जाएं तो हम कैसे उस पर्टिकुलर इलनेस से कम अप कर सकते हैं। बाय कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी, प्रॉपर इनटेक लेके हेल्दी फूड्स के, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करके, प्रॉपर वैक्सीनेशन और डॉक्टर से कंसल्ट करके। आफ्टर लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स we did exercise number 1, which is on page number 21, and it was all about this chapter. We had to choose the particular correct answer from the given options. So that these all were the things, my dear students, we have covered so far. इसके बाद my dear students, now let me guide you about what can come in your पेपर। सो स्टूडेंट्स, आप जब भी जो चीज़ें भी हमने अब तक पढ़ी हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट नंबर 1 ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं, जितनी भी लर्निंग की है हमारे चैप्टर में से, सब कुछ आ सकता है। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास और इट्स डिस्कस्ड इन द book or your copy. Then senses में भी we can ask about how many senses do we have, which organ do we use, any type of question related to the chapter or the exercises given, and we have completed alhamdulillah all of them. Then healthy habits में आपके साथ ये आ सकता है कि why do we eat things, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमने इस एक्सरसाइज में किया हो वो आपसे पूछा जा सकता है in your exams. So these all 3 chapters will be included in your paper, so prepare it well. So students, after getting the overview of the lessons, let's start with the guideline of evaluation exams, my dear students, कि आखिर हमारे exams किस format के आएंगे। So all the work which we have done in lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3, जितना भी काम हमने अपनी online classes में cover किया है, वो सारी exercises आपके exam का part होंगी। आपका exam 25 marks में divided होगा और उसका duration होगा 90 minutes।
जितना भी वर्क हमने बुक में किया है, जो भी वर्क हमने कॉपी में किया है, वो सब कुछ आएगा. वेदर इट्स फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द बेस्ट आंसर, बट एवरीथिंग विल कम फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस विच वी हैव डन. Thank you so much for the class. Allah Hafiz.